ईरान से तेहरान से हमें ज्वाइन करेंगे, वो भी ईरानी डिफेंस एनालिस्ट हैं और प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान के। उनसे भी बात करेंगे। साथ ही साथ सीनियर सहाफी तज्जियाकार हामिद मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और हामिद मीर साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो अभी जो बैरूत का दौरा करके आए हैं, बैरूत में सूरत हाल देख कर आए हैं, उनको वहां पर क्या सूरत हाल उन्होंने देखी और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वहां के लोगों को। और साथ ही साथ हमें डॉक्टर अब्बास सैयद भी ज्वाइन करेंगे जो कि डायरेक्टर रेडियो तेहरान है, एक्सपर्ट हैं ईरान के इशूज पर। इन तमाम तर मेहमानों से बात करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है, यानी ईरान और इसराइल के दरमियान मुमकिना जंग के बढ़ते खतरात पर बात करने से पहले ये जानना जरूरी है कि दोनों मुमालिक के दरमियान अस्करी तवाजुन क्या है और ईरानी और इसराइली फौजी ताकत में कितना फर्क है। इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद हम अपने तज्जियाकारों से बात करेंगे। इसराइल और ईरान की अस्करी कुव्वत को देखा जाए तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में ईरानी फौज को दुनिया में 14वें नंबर पर रखा गया है, जबकि इसराइल 17वें नंबर पर आता है। इसराइल अपने जंगी बजट पर 24 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च करता है, जबकि ईरान का दिफाई बजट 10 अरब डॉलर के करीब है। हाजिर सर्विस फौजी कुव्वत के लिहाज से ईरान का इसराइल पर पल्ला भारी है। ईरान के पास पासदारान इनकलाब के 1,90,000 गार्ड समेत 6,10,000 फाल फौजी मौजूद है, जबकि इसराइल की हाजिर सर्विस फौजियों की तादाद 1,70,000 है। इसराइल इस वक्त जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस है। इसकी फिजाइया के पास F-35, F-16 और F-15 समेत 241 जेट और 48 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जो इसे ईरान पर फिजाई बरतरी देते हैं। इसके बरक्स ईरान के पास 186 पुरानी साख्त के अमरीकी और रूसी तैयारे हैं और 13 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें F-4, F-5, F-7, F-14 और रूसी साख्ता सिकोई शामिल हैं। फिजाई मैदान में इस कमी को ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम के जरिए पूरा करने की कोशिश की है। ईरान के पास 300 किलोमीटर की रेंज वाले शहाब 1 से लेकर 2500 किलोमीटर तक मार्क करने वाले सुमार क्रूज मिसाइल हैं, जबकि हाइपरसोनिक अल-फतह बैलिस्टिक मिसाइल भी मिसाइल निजाम का हिस्सा हैं। इसके अलावा ड्रोन्स की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन्स प्रोग्राम की आफादियत का मुजाहरा 3 अप्रैल और 1 अक्टूबर को इसराइल पर हमलों में किया। इसके अलावा किसी भी फजाई हमले को गैर मौसर बनाने के लिए ईरान का फिजाई दिफाई निजाम रूसी साख्ता S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तर्ज पर तैयार करता पावर 373 सिस्टम पर मुश्तमिल है। इसराइल अपने मिसाइल प्रोग्राम पर तबसरा नहीं करता, लेकिन दीगर जराए से दस्तियाब मालूमात के मुताबिक इसराइल के पास 250 किलोमीटर की रेंज वाले डिलाइला मिसाइल समेत 6,500 किलोमीटर तक मार्क करने वाले जरेको 3 मिसाइल हैं। इसके अलावा इसराइल का फिजाई दिफाई निजाम 3 तहों पर मुश्तमिल है, जिसमें एरो सिस्टम, डेविड स्लिंग और आयरन डोम शामिल हैं, जिसका शुमार दुनिया के बेहतरीन सिस्टम में किया जाता है। तफसीली मवाजना आपने देखा और देखा कि ईरान और इसराइल की फौजी ताकत में क्या डिफरेंस है। इसी रिपोर्ट के बाद अब डिस्कशन का बाकायदा आगाज करते हैं। जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम तेहरान इज मिस्टर अब्बास असलानी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मिस्टर अब्बास। न्यूक्लियर और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और ऑयल रिफाइनरी, what is Iran's preparation for the expected Israel's attack? Iran's armed forces have been preparing to defend against any action toward any site or any facility in the country. On different fronts they have been preparing to defend, but this has not been just limited to one stage. The second stage would be Iran's response. Iranian officials, whether political or military ones, they have warned that a proportionate response will follow. Specifically when it comes to nuclear facilities, I think the consequences could be very wide and it can backfire, and that's why I think American government is warning against any action against those facilities. And when it comes to the energy sector and the oil refinery, I think this can also have its own repercussions. This can create tensions in the global energy market. I think in terms of geographical size or many things like that, Iran would be in a better position. Iran is ready for any scenario, and in the case of a full-scale war in the region, Iran will respond
to any Israeli, attack. अब्बास इस्लानी साहब कह रहे थे कि ईरान किसी भी खतरनाक सूरत हाल के लिए तैयार है और खत्ते में मुकम्मल जंग की सूरत में ईरान इसराइली हमले का जवाब देगा. जॉइनिंग अस नाउ इज मिस्टर एनएस एंजन. उनसे भी बात करेंगे. एनएस एंजन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर एनालिसिस, व्हाट एरियाज ऑफ ईरान माइट बी टारगेटेड बाय इसराइल? The war between Israel and Iran is not that the huge target for attack, nuclear or oil, because there is win-win war between Iran and Israel. So the most targets Israel had put on the civilian targets, like in Damascus when they attack the embassy, and the other side when they attack many of the science professors in Tehran and Isfahan and the other cities in Iran. So in the last example of missiles which Iran attack Tel Aviv and around Tel Aviv, around 250 missiles. These missiles are just fake missiles. So the both of sides, they will not attack real target. They are not attack the oil reference. They will not attack the nuclear centers. All right. Stay with us. We'll come back to you. NS Engine कह रहे थे कि दोनों फरीक किसी हकीकी हदफ पर हमला नहीं करेंगे और इसी पर अब मजीद भी हम बात करेंगे. सऊदी अरेबिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हुसैन अशमरी साहब. हुसैन अशमरी साहब, thank you so much for your time. And as NS Engine said, what is your analysis on the current situation of Middle East, and what do you think? What is Iran's preparation for the expected Israel's attack? Iran now, after the attack, rocket attack on Israel, I'm sure they are waiting or suspecting that their nuclear facilities might be hit or oil refineries. But we have a phone call yesterday between Mr. Biden as well as Mr. Netanyahu. I think Mr. Biden have said clearly to Netanyahu not to target any nuclear facilities as well as any oil refineries as well. But I'm sure Israel is going to retaliate very viciously towards Iran because it was hit by 181 missiles. So the counterattack by Israel, as the war room had decided yesterday in the Council of Ministers, that they are targeting higher, let's say, targets. Maybe it's very hard for them to hit the nuclear facilities because the nuclear facilities have effects over the neighboring countries. So I think it's very hard for Israel to demolish any nuclear facilities without going back to the United States as well as to Europe to decide so, because the aftermath of the the retaliation. All right, Mr. Hussain, stay with us. हुसैन साहब अपने तज़िये में ये कह रहे थे कि इसराइल कभी भी मशवरा किए बगैर अमरीका से हमला नहीं करेगा क्योंकि वो जानता है कि फिर दीगर पड़ोसी ममालिक भी इफेक्ट होंगे. अब हम बात करेंगे डॉक्टर फवाद इजादी साहब से. जॉइनिंग अस नाउ फ्रॉम तेहरान इज मिस्टर फवाद इजादी. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. एज वी आर डिस्कसिंग ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, मिस्टर फवाद, माई क्वेश्चन टू यू इज, हु डू यू थिंक इज मोर पावरफुल militarily between Israel and Iran? I think Iran's military is more powerful because Iran does not depend on outside powers for its military needs. Iran's military capacity is indigenous. Israel's military capacity depends on the United States, and that is a problem when your country is depending on some other country for support in the long run. That could cause difficulties. Power of Iran's ballistic missiles last week
You saw the power of the Iron Dome. Iran was able to penetrate the Iron Dome with the videos that were available, taken by phones, smartphones. You had about 70 missiles hitting the ground, and there were targets not near population centers, so there were many more missiles that hit their targets. Israel is quite vulnerable in terms of what they can do with ballistic missiles, especially hypersonic missiles that Iran has. And Iran is trying to create deterrence. I think ballistic missiles are good deterrents. Iran's weapons are conventional. Iran doesn't have any weapons of mass destruction. Iran has a major cyber capability, but cyber capabilities are categorized as conventional capabilities today. Thank you, Mr. Fuad. We'll come back to you. फवाद एजादी साहब कह रहे थे कि उन्हें लगता है कि ईरान की फौज ज्यादा ताकतवर है क्योंकि ईरान अपनी फौजी जरूरियात के लिए बाहर की ताकतों पर इन्हिसार नहीं करता। ये खुसूसी ट्रांसमिशन वॉर रूम मशरिक वस्ता इस वक्त जारी है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सीनियर सहाफी तज्जियाकार हामिद मीर साहब से बात करेंगे, जो बैरूत का दौरा करके आए हैं, बैरूत की मुश्किलात और वहां पर बमबारी के बाद और अभी भी जो सूरत हाल देख कर आए हैं उनसे बात करेंगे। साथ रहिए। ब्रेक के बाद वॉर रूम मशरिक वस्ता की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है और हम बात कर रहे हैं ईरान और इसराइल में अस्करी बरतरी किसको हासिल है और मशरिक वस्ता में आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने वाला है और इसराइल के मुमकिना हमले की सूरत में ईरान की क्या तैयारी है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे दिफाई तज्जियाकारों से, माहिरीन से, और अब सीनियर सहाफी तज्जियाकार हामिद मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हामिद मीर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप बैरूत गए, आपने आंखों देखा, अहवाल बताइए, क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है लबनान के शहरियों को बमबारी के बाद, इस वक्त क्या सूरत हाल है? सबसे पहले तो ये बताइए। देखें, मैंने 2006 में भी लेबनान और इसराइल की जंग को कवर किया था। उस वक्त काफ़ी ज़्यादा दिन वहाँ पे मैंने गुजारे थे। उसकी वजह यह थी कि जो बैरूत का एयरपोर्ट था वो बंद हो गया था और लेबनान और शाम की जो सरहद है वो भी बंद हो गई थी। ये जो 2024 की जो लड़ाई है, इसमें मैंने 2006 की निस्बत वहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं गुजारे। उसकी एक बुनियादी वजह है कि इस दफ़ा जो लड़ाई है उसमें ज़्यादा शिद्दत है और जो 2006 में जो जंग हो रही थी, उस जंग में जो मुकामी आबादी थी उसका सहाफ़ियों के साथ जो उनका तर्ज अमल था वो काफ़ी कोऑपरेटिव था, वो काफ़ी ताउन करते थे। लेकिन इस मरतबा हमने देखा है कि जो मुकामी आबादी है वो सहाफ़ियों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। ख़ास तौर पे जो वेस्टर्न जर्नलिस्ट थे उनके साथ तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे। जितने दिन मैं बैरूत में, अलसैदा में, त्रिपोली में और लेबनान के इलाकों में मैं रहा, तो मैंने ये देखा कि जो इजराइल है वो बड़ी आसानी के साथ हिजबुल्लाह के दफातर को, हिजबुल्लाह के फौजी ठिकानों को बड़ी आसानी के साथ निशाना बना रहा था। और उसकी एक बड़ी वजह थी कि टेक्नोलॉजी जो है वो उसमें बरतरी है इजराइल को। खास तौर पे उनके जो ड्रोन हैं, तो उनके ड्रोन जो हैं वो बहुत एक्टिव थे नजर वहां पे लेबनान में, और वो जब जिस वक्त चाहते थे वो जाके कहीं पर भी वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाते थे। सिर्फ हिजबुल्लाह नहीं बल्कि हमास के कुछ लीडर जो लेबनान में मौजूद थे उनको भी उन्होंने निशाना बनाया। हिजबुल्लाह जो है उसकी जो मिलिट्री पावर है वो बज़ाहिर कहा जाता है कि 1 लाख के करीब फाइटर्स हैं उसके पास, लेकिन उन 1 लाख में जो बाकायदा लड़ने वाले जो फाइटर हैं वो मेरा ख्याल है 40,000 के करीब हैं, और उन सब को असला और बाकी जो उनकी ज़रूरियात है वो सारी की सारी ईरान पूरी करता है। और हिजबुल्लाह के पास एयर पावर इतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ, उनके पास इजरायली जहाज़ों का मुकाबला करने के लिए कुछ मिसाइल हैं, लेकिन एयर पावर उनके पास नहीं है। तो ये जो लेबनान में जो इस वक्त जंग चल रही है, ये दरअसल हिजबुल्लाह जो है वो ईरान की प्रॉक्सी है। तो ये ईरान और इजराइल के दरमियान चल रही है, और इजराइल जो है वो ग्राउंड फोर्सेस को कम इस्तेमाल कर रहा है और एयर फोर्स को और ड्रोन्स को ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, और इसलिए
अभी तक इजराइल जो है वो लिबनानियों का यानी कि हिजबुल्लाह का बहुत ज्यादा नुकसान करने में कामयाब है। मीर साहब, हम आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस्राइल ईरान के किन इलाकों को निशाना बना सकता है, लेकिन इस दौरान अब्बास सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। तेहरान में ही है वो, और वो ज्यादा बेहतर तरीके से वहां के मामलात को हमारे सामने रख सकते हैं। अब्बास सैयद साहब, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये बात हो रही है, जिस तरह हमारे दीगर तजियाकार भी बात कर रहे हैं, एटमी या फौजी तंसीबात या ऑयल रिफाइनरी, इसराइल का अगला टारगेट ईरान पर क्या हो सकता है, और मुमकिना हमला जो इसराइल कर सकता है उस पर ईरान की क्या तैयारी है? राशिद शमी हुकूमत की तरफ से इसराइल को जो धमकियां और थ्रेट्स आ रहे हैं, उसमें जाहिर दुश्मन की तो पूरी कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए, और इस वक्त इसराइल की तरफ से भी इसी तरह के ऐलानात हो रहे हैं उससे। लेकिन देखना यह है कि क्या इसके रिएक्शन के लिए भी इसराइल तैयार है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान उसका बड़ा भरपूर जवाब देगा अगर उसने एटमी टेक्नोलॉजी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और एटमी तंसीबात पे हमला किया, तो ईरान के पास भी मुतबादिल जवाब है। तो अब भी यकीनन पहले 10 बार सोचेगा। अब अगर ईरान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो ईरान भी जवाब में उससे बड़ी कार्रवाई करेगा, क्योंकि एक सर्वाइवल की जंग भी है। ईरान भी जवाब में उससे बड़ी कार्रवाई करेगा, ये आपका तज़किया है। मिस्टर एंजन, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग, हु इज मोर पावरफुल militarily between, if we compare Israel or Iran? Actually, Iran, they have similar ways to get more and more soldiers and manpower than Israel. If we calculate it by manpower, the Iran have more than this power, but actually we calculate it by the technology and the air force. Actually, Israel, they always update all the stuff of air force, aircrafts, and courses of pilots, and always they have new technologies for these wars and extra. But in Iran, we see that they, from decades, they use the same aircrafts, and they don't have any technology, and they don't have any update on the system or on the technical board. So in this section, we see Israel is more power, and they have the power to beat Iran easily by air force. मिस्टर इंजन ये कह रहे हैं कि ईरान के पास कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है और उनके सिस्टम की टेक्निक में कोई ताज़ा अपडेट नहीं है, उनके सिस्टम इतना अपडेटेड नहीं है। मिस्टर हुसैन अशमरी, माय क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट डू यू थिंक इज मोर पावरफुल मिलिटरीली बिटवीन, इफ वी कंपेयर इजराइल और ईरान? Military is far advanced than the Iranian. The Iranian army depends on the missiles as well as rockets. Unfortunately, they're without advanced technologies. They're like kind of blind rockets. They're thrown to the enemy and they're left in the sky. But we see in the, like what Israel has tried so far, the smart bombs, the smart rockets, the F-35. The retaliation last April from Iran was on the S-300, the crown of the air defense systems of Iran. That indicated a message to the Iranians that we can hit whatever behind the S-300. So there is no comparison between the Israeli advanced technological weapons with the developed squad of Iran. So Iran, the strategic power of Iran is the missiles, and the Iron Dome, which is an air defense system built by Rafael Israeli company. It's a mix of THAAD as well as the Patriots and different
aerial defense systems. यहीं से हम डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और हामिद मीर साहब और अब्बास सईद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, यही सवाल उनके सामने रखेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से देखिए वॉर रूम मशरिक़ वस्ता। ब्रेक के बाद वॉर रूम मशरिक़ वस्ता की खुसूसी ट्रांसमिशन के सिलसिले को एक बार फिर आगे बढ़ाते हैं। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब्बास सईद साहब मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, अरब दिफाई तजियाकारों से आपकी क्या बात हुई है, वो क्या राय रखते हैं इस बारे में बताइए। और ईरान और इसराइल के दिफाई निजाम का अगर मुआवजा किया जाए या देखा जाए कि अस्करी एतबार से ज्यादा ताकतवर कौन है, तो ऑन पेपर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका अगर ऑब्जेक्टिव जवाब दिया जाए तो शायद कुछ लोग उससे इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि लेबनान और इसराइल में इस वक्त लड़ाई हो रही है। तो इसराइल जो है वो अकेला नहीं है, उसके साथ अमेरिका भी है और उसके साथ कुछ मगरबी ताकतें भी हैं। और लेबनान जो है उसके साथ फिलहाल इस वक्त हमें सिर्फ ईरान नजर आ रहा है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये लड़ाई दरअसल इसराइल की और ईरान की है। अब ईरान के साथ कौन है? ईरान के साथ ज्यादा से ज्यादा आप कह लें कि शाम है, या किसी हद तक इराक वो उसका साथ दे रहा है और हिजबुल्लाह उसका साथ दे रही है। अरब ममालिक जो हैं वो मजम्मत तो कर रहे हैं इसराइली हमलों की, लेकिन वो खुलकर ईरान के साथ नहीं है। तो अगर ये लड़ाई जो है ये फैलते फैलते ये बराह रास्त इसराइल और ईरान की लड़ाई में तब्दील होती है, तो यहां पर फिर इम्तिहान आ जाएगा ओआईसी का कि ओआईसी खुलकर ईरान का साथ देती है या नहीं देती। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि ईरान और इसराइल की जब आप मिलिट्री पावर का कंपैरिजन करते हैं तो कहीं पर आपको मसलन अफरादी कुव्वत में ईरान की बढ़तरी नजर आती है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मैदान में, एयरफोर्स और नेवी के मैदान में आपको इसराइल की बढ़तरी नजर आती है। तो साथ ही साथ जब आप दो ममालिक की मिलिट्री पावर का एनालिसिस करते हैं तो आप उनके एलाइज का भी एनालिसिस करते हैं। तो ये देखें, अब आप ये एक बड़ी ही काबिल गौर बात है कि ईरान एक इस्लामी मुल्क है, ओआईसी का मेंबर है, लेकिन इसराइल और ईरान की अगर लड़ाई जो है वो फुल स्केल जंग में तब्दील होती है तो अभी तक मैं या कोई और सहाफी या डिफेंस एनालिस्ट वो पूरे यकीन के साथ ये नहीं कह सकता कि ओआईसी जो है वो पूरी तरह ईरान के पीछे खड़ी हो जाएगी या पाकिस्तान या सऊदी अरब या मिस्र। यही पॉइंट मीर साहब, अब्बास सईद साहब आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है, आप भी एग्री करते हैं मीर साहब से? ईरान के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी बड़ी तरक्की याफ्ता है और उसकी दलील ये है कि जब एटमी मुज़ाकरात हो रहे थे तो उस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा मुतालबा ये था कि ईरान अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी से पीछे हट जाए, ये इसको यहीं पे छोड़ दे, इसको मजीद इम्प्रूव न करे। तो ईरान के पास इस वक्त जो बड़े मिसाइल हैं, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि उसमें सज्जील जो है वो एक बड़े इनके मिसाइलों में शामिल है। एक कासिम सुलेमानी के नाम से उन्होंने बनाया हुआ है, फत्ताह जो इन्होंने अभी इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया है, इसी तरह खैबर की 2-3 जनरेशन है। तो ये सारे जो है वो 2000 से ज्यादा किलोमीटर के जो है वो इनकी रेंज है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब्बास सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे, हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे तेहरान से, डॉक्टर फवाद इजादी, हुसैन अशमरी फ्रॉम सऊदी अरेबिया, NS इंजन, एंड मिस्टर अब्बास असलानी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मशरिक़ वस्ता में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है इस पर हमने तफसील से बात की, और इसराइल और ईरान में फौजी ताकतवर ज्यादा कौन है, किसकी ज्यादा ताकत है, और साथ ही साथ हमने ये भी बात की कि क्या मुतवक्के अगर हमला होता है इसराइल की जानिब से तो ईरान की क्या तैयारी हुई है। वॉर रूम मशरिक़ वस्ता से आपको मुसलसल इस बारे में हम अपडेट्स देते रहेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।